Hi everyone. I think that you're doing great. Today I'm again with a new video on spoken English practice. Today we will practice on future tense, how to use it, कैसे future tense को इस्तेमाल करते हैं. फ्यूचर टेंस को फ्यूचर की एक्टिविटीज़ एक्शंस बताने के लिए हम फ्यूचर का यूज़ करते हैं. इसमें दो तरह से सेंटेंस हम बनाते हैं, एक तो विल शैल लगा करके और दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ में भी हम फ्यूचर की एक्टिविटीज़ को बताते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम नेटिव स्पीकर्स यूज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस टू स्पीक अबाउट प्लान और एक्टिविटी दैट इज़ टू बी डन इन नियर फ्यूचर. करीब के फ्यूचर में किसी एक्शन को एक्टिविटी को बताने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को यूज़ करते हैं. आइए हम शुरू करते हैं कैसे हमें इस पर प्रैक्टिस करना है, कैसे हम सेंटेंसेस अपने बना सकते हैं. हमने हर वीडियो में हर बार आपको बताया है कि कन्वर्सेशन में वी यूज़ टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. वन इज़ असर्टिव एंड द अदर इज़ इंट्रोगेटिव. इन असर्टिव वी टेल समथिंग, कुछ बताना है, आप असर्टिव को यूज़ करेंगे. उसका फॉर्मूला हमने आपको बताया हुआ है. हर ग्रामर की जो वीडियोस हैं टेंसेस पे, उनमें हमने सबका फॉर्मूला बताया है कि सेंटेंस बनाने के लिए कहाँ पे कौन सी चीज़ रखेंगे असर्टिव में और इंट्रोगेटिव में कहाँ पे रखेंगे. अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो फ्यूचर के वीडियो में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के वीडियो में आप जा कर के फॉर्मूला देख सकते हैं. लेट्स स्टार्ट कन्वर्सेशन. व्हाट आर यू डूइंग टुमारो? कल आप क्या कर रहे हैं? I'm not doing anything special, but I think I will study as to take my examination next week. अगले हफ्ते एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी हम पढ़ाई करेंगे और कुछ स्पेशल नहीं है. So tell me about yourself. What are you doing tomorrow? कल आप क्या करने वाले हैं? Give me your answer. Great. Now let's use will or shall to ask question. What will you do tomorrow? I will go to market. What will you do tomorrow? What is your answer? Good. When will you take lunch? आप लंच कब करेंगे? Usually I take lunch at 1 o'clock, but today I'll take it at 2 because I have some official work. आपका क्या आंसर होगा? What time will you take lunch? लंच कब करेंगे? You'll say I'll take lunch. I'll means I shall और I will भी आप कह सकते हैं, गलत नहीं होगा. बट what will be your answer? Say the sentence. When will you take lunch? I'll take lunch at. Okay. Will your father come to school tomorrow? क्या कल तुम्हारे पिताजी स्कूल आएंगे? Yes, he will. हाँ, वो आएंगे. अगर आपका आंसर है पॉजिटिव में, yes, he will, नहीं आएंगे. No, he won't, नहीं, वो नहीं आएंगे. Where will you go tomorrow? आप कल कहाँ जाएंगे? I'll go to Delhi. I'll go to my school. I'll go to playground. What is your answer? आपका आंसर क्या बनेगा इसमें? I'll go to. Okay. How much money will you spend on your new project? आपके न्यू प्रोजेक्ट पे कितना खर्च करेंगे? I think that I'll spend near about
2 lakh rupees on my new project. If you have any project, but you have to answer, आपको आंसर देना है इसमें। आप नए प्रोजेक्ट पे कितना खर्च करेंगे? आप बोलेंगे I'll spend, हम खर्च करेंगे नियर अबाउट, लगभग 50,000 rupees, 1 lakh rupees, 2 lakh rupees as per the project that you are looking for. Okay, again, next question. Will you come to me in the evening? क्या शाम को मेरे पास आएंगे? Yes, I will. No, I won't because I am engaged. हाँ, नहीं आएंगे क्योंकि हम बिजी हैं, engaged हैं. Okay, will you play cricket in the evening? क्या शाम में क्रिकेट खेलेंगे? Yes, I'll play cricket in the evening. Will you go for a walk in the morning? क्या मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे? Yes, I'll go. हाँ, हम जाएंगे. What is your plan for tomorrow? कल के लिए आपका क्या प्लान है? I'm going to watch a movie tomorrow. I'm going to watch a movie. I'm going to watch a movie. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस को यहाँ यूज़ किया गया है। नियर फ्यूचर के लिए आप प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से जो भी एक्टिविटीज़ आपको लगता है नियर फ्यूचर में होना है, आप प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस को यूज़ करते हुए बोल सकते हैं। आर यू गोइंग टू टेक डिनर इन अ रेस्टोरेंट? क्या आप रेस्टोरेंट में डिनर करने जा रहे हैं? नो, आई एम नॉट गोइंग देयर, आई विल बी स्टडिंग एट होम. हम घर पे पढ़ रहे होंगे, यानी हमें पढ़ना है. I'll not go to take dinner in a restaurant. Do you want to go with your friends to watch movie? Do you want? क्या आप फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाना चाहते हैं? No, I don't want to go with my friends to watch movie. नहीं, हम अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने नहीं जाना चाहते. ये प्रेजेंट डेफिनिट का सेंटेंस है. तो अभी हम मिसलेनियस सेंटेंसेस पूछेंगे आपसे. मिला जुला करके हमने प्रेजेंट पे बात कर लिया, पास्ट पे भी बात कर लिया, फ्यूचर पे कर रहे हैं. अब हम मिला जुला करके किसी भी टेंस को यूज़ करके बात करेंगे. हम सवाल पूछेंगे, आप उसका आंसर बताएंगे. तो इस तरह से ये आपको सेंटेंस बना करके पूछना और बताना. आप दूसरे से किसी से भी क्वेश्चन बना करके सवाल पूछें या ख़ुद से आपको बोलने के लिए कोई नहीं है, तो you can make your own questions and then answer yourselves. That will improve your communication skill, your conversation skill, because practice without a partner, you can improve your conversation by using sentences in interrogatives and in assertive sentences. Now it's time to tell you a story. I'll tell you a story and listen it carefully, and later I'll give you some questions to answer them all if you have comprehended. अगर आपने समझ लिया है, उस स्टोरी को सुन करके आप हमारे सवाल का जवाब देंगे, तो इसी पे हम इसको सेशन को कंक्लूड करेंगे. Watch and listen. Mahatma Gandhi was the greatest man of his time. He was born at Porbandar in Gujarat on October 2nd, 1869. His father was the Diwan of a state and his mother was an ideal woman. After receiving education in India, he went to England to study law. After returning from there as a barrister, in the beginning he started his practice in South Africa, but soon started Satyagraha movement to improve the pitiable condition of the Indian settlers there. After finalizing Gandhi's Smudge Pact, he came back to India from there. He considered truth and non-violence as the best weapons for achieving India's freedom. Now I think that you have understood it. मुझे लगता है आपने इसको समझ लिया है. अगर नहीं समझा है तो हम हिंदी में आपको बता देते हैं.
महात्मा गांधी अपने समय के सबसे महान पुरुष थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। उनके पिता एक रियासत के मंत्री थे और उनकी माता एक आदर्श स्त्री थीं। भारत में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वे वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए। वहाँ से बैरिस्टर बनकर वापस आने के बाद उन्होंने आरंभ में दक्षिण अफ्रीका में वकालत प्रारंभ की, परंतु शीघ्र ही वहाँ रहने वाले भारतीयों की दीन दशा सुधारने के लिए उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया। गांधी स्मट समझौते को हो जाने पर वे वहाँ से भारत लौट आए। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन्होंने सत्य और अहिंसा को ही सर्वोत्तम हथियार माना। द स्टोरी एंड्स हियर and now it's a time to ask some questions. Answer the questions, and if you are not able to answer them, you can check the correct answers in the description box to rectify your mistakes. Question number 1. Where was Gandhi ji born? गांधी जी कहाँ पैदा हुए थे? Question number 2. What was his father? What was means वो उनका प्रोफेशन क्या था? What was the profession of Gandhi ji's father? When did he go to England? वो इंग्लैंड कब गए? Where did he start his practice? उन्होंने अपनी प्रैक्टिस कहाँ शुरू की? Why did he start सत्याग्रह movement? उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट क्यों चलाया? And the last question, what were the 2 best weapons for him to achieve India's freedom? Now the session is over for you, and I think that it will help you speak English in future tense. If you want to plan something, if you want to think to do something, you can use will or shall to make sentences, as well as present continuous tense to speak about your future plan or activities, or you want to do something in future. I'm going to make the movie and upload it. I'm going to study now for my own interest, for my own hobby. I'm going to. All these phrases are to make sentences to tell your future activities. I'm going to market. I'm going to station. I'm going to Delhi tomorrow. I'm going to take exercise. I'm going to work at my video. All these things are to make sentences, help you. Try to make sentences of your own, and the only thing that will help you to speak English fluently is practice, practice, and practice. Without practice, you will not be able to do anything, because it's not a pill, it's not a medicine that can boost you with the energy to speak English without your effort. Your effort is essential. Your effort is damn sure to make you fluent in this language, English. I hope that this video will help you to speak English better than you speak now. Thank you for watching.